Good morning, one and all. So we have to start with the municipal solid waste management. And basically, you're talking about management practices where we will talk about energy from the waste, all kind of things we were discussing the last lecture. Okay, so we have discussed municipal solid waste management, incineration, pyrolysis, and gasification in detail in last lecture. And all the things related to this are no, not all, but will be uploaded on LMS very soon so that you can go through with this in detail. Now, as I discussed in the last lecture, composting. Now, this is another particular waste management practices which I'm going to discuss with you, and this is something very important. I told you previously while discussing this kind of thing, while taking a lot of examples from actual, like cases. Like I told you in Thapar University itself, or many other institutes, we have many hostels with a good number of students. So if you really collect your data, near about in a single day, more than 1 ton of waste is being generated. I'm talking about food waste, yard waste, all things, other waste. If you combine, it can be 1.5 ton or 2 tons sometimes. Okay, so I'm talking about a huge waste. So this waste I'm talking about is not being taken care efficiently. It's being right now it's being given to the piggery particular department for feeding the pigs. But anyhow, this waste is not exactly going for all the piggeries. There's some sort is wasted also. और कहाँ waste होता है हम आपको बताएंगे with time. But the major concern is that all this waste can be effectively can be taken for composting. Maybe next lecture I want to show you the actual pictures of those countries. I told you now I want to show you those pictures of the countries where I visited, what they are doing with these kind of waste when they're generating in their countries. ठीक है, तो मैं एक्चुअल पिक्चर दिखाऊंगा जो उनकी जो विसिलिटी जिनको मैं विजिट करके आया था बेटा. And I want to share the actual pictures with you which I clicked over there. But right now what we are studying right now you know very well. Okay, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जिसके बारे में कि like in India we have a big major problem that the waste is not composted, sorry, separated from the source. Okay, कल भी मैं देख रहा था, I was like somewhere on the road, कुछ काम गया था तो मैंने देखा एक म्यूनिसिपैलिटी का ट्रक आया, उसने रोड में साइड में डस्टबिन पड़ा, उस डस्टबिन उठाया और पूरा उसके बीच में एम्प्टी कर दिया, मेन vehicles के बीच में. So I was watching the huge waste they are collecting for nothing because that waste was totally mixed with plastic, ये rubber, ये cardboard, wet, dry, everything waste. So I was worried. I was thinking, see, we are teaching these things to our kids or our students, okay, and there's no any practical solution yet in place for even small countries, sorry, small cities, small area. And when you ask somebody, you know what is composting? Yes, I know what is composting. पता सबको है, एग्जीक्यूट नहीं करना. ठीक है जी. तो अगर हम ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करते तो what we can think about big projects. अब इसका ये मीनिंग नहीं है कि बेटा मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं एनर्जी निर्माण पढ़ा रहा हूँ इस चीज के लिए, ठीक है, तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ. ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी लास्ट टाइम, मैंने आपको शायद बताया भी था बेटे आप सबको कि मेरे स्टूडेंट्स ने जो प्रीवियस बैचेस हैं फर्स्ट ईयर के जितने पढ़ चुके हैं, तो दे हैव डन अ वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट्स अंडर माय सुपरविजन. उसमें एक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का भी था जो हमने बात की थी, और वही बात होती है कि एप्लीकेशन हर चीज की. सो दे हैव डिजाइंड अ पर्टिकुलर डस्टबिन बिकॉज उन्होंने जो ऑब्जर्व किया कि रोड साइड पर डस्टबिन होते हैं हर सिटी में, वो एक्चुअली ओवरफ्लो होके लिटरिंग होती रहती है यहाँ पे, ओवरफ्लो होके. म्यूनिसिपैलिटी को पता नहीं कि कौन सा ओवरफ्लो हो गया है और साइड में पूरा गंद पड़ा रहता है और वहां पे एनिमल फीड करते हैं, दिस विल लीड टू द एक्सीडेंट्स. सो दे डिजाइन्ड अ डस्टबिन द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्क दे हैव डन. उसमें मैं उनको और कुछ करने को बोला था लेकिन उसके बाद तो काफी कुछ डाइल्यूट हो गया बेटे. कि व्हाट वी एग्जीक्यूटेड कि इफ दिस डस्टबिन इज 70% to 80% fill, it automatically gets locked.
और डालेगा इसके बीच में. Okay, you have a small space on the top where the waste is being put. Number one. Okay, चलो सेग्रीगेट नहीं हो रहा सोर्स, मारो गोली, हमारे में कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे. अगर हो जाता तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये हम सेव कर सकते हैं. Once you want to put all the things, once the 75% 80% is filled, then by default you have some system installed over here. It give a signal to the shutter, automatically get closed. देन उसके बाद मैंने बच्चों को बोला इसको हम आगे वर्कआउट करते हैं कि इसमें क्यों ना हम एक स्मार्ट चिप लगाएं इसके ऊपर. स्मार्ट चिप थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग विल गिव आवर सिग्नल्स टू द म्युनिसिपल अथॉरिटी कि दिस एरिया सिग्नल गोइंग रेड, इसका भी से फील हो गया. और सेम सिग्नल इज गोइंग टू द लोकल वेंडर, लोकल पर्टिकुलर यू नो द कलेक्टर आल्सो, जो इस एरिया को म्युनिसिपैलिटी को जो इस एरिया को नॉमिनेट किया गया है, तो उसके मोबाइल में भी ये ऐप है. So if this particular dustbin is not picked up, now they have a valid reason that this dustbin was full 2 days ago or 1 day ago. As per the indication given by the smart chip, we have a data in the main office and we have a data in your mobile also. And you need to explain these kind of things, why that particular is not emptied. It's a beautiful thing how the technology can work hand in hand with the problem which right now we are facing. Okay, so actually वही है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है एक्स डायरेक्शन में जा रही है, रिक्वायरमेंट वाई डायरेक्शन में है और एक्चुअल नीड जेड डायरेक्शन में है, वो कोइंसाइड ही नहीं हो रही है आपस में. तो उसमें सबसे बड़ा एक जो ये वाला पार्ट है जो मैं बात कर रहा हूँ, कंपोस्टिंग. अब कंपोस्टिंग की बात करेंगे, आपको पता है कंपोस्टिंग क्या होती है, मैं पढ़ा भी दूंगा कंपोस्टिंग क्या होती है आपको. तो सबसे बड़ी बात कंपोस्टिंग की बच्ची ये है, आपके घर में डेली, आप अपने घर में बैठे हो, डेली आपके घर में ट्राई करो कि कितना वेट वेस्ट जनरेट होता है रोज की रोज. तो घर की बात छोड़ो, फिर मोहल्ले की बात आ जाओ बेटा, पूरी लोकेलिटी की बात आ जाओ बच्चे. एंड वेयर दिस वेट वेस्ट इज गोइंग, डंपिंग, नथिंग एल्स. एंड यू नो दिस ऑल द वेट वेस्ट यू कैन रियली कन्वर्ट टू कंपोस्ट. हम कहते हैं कि सर ये हमारे काम का थोड़ी है, टेक्नोलॉजी हमारे काम की थोड़ी है, हम इंजीनियर्स हम ये. लेकिन जब उस कंट्री में देखते हैं वो हर एक ग्राम को कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं, जो मैं देख के आया वहां पे, जो मैं आपको विद टाइम दिखाऊंगा भी. ठीक है, और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, चलिए इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं फिर आपको पता चल जाएगा इसके बारे में है क्या है. तो कुछ बंदे कहते हैं कि सिर्फ क्यों कंपोस्टिंग के लिए 1 महीना वेस्ट करना है, इट विल टेक 1 or 2 months टू मेक अ कंपोस्ट. ओके, सपोज डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी यू वांट टू यूज, कम में भी हो जाएगी, लेकिन कंपोस्ट क्वालिटी मेंटेन करती है, जो आगे बताने वाला हूँ. सो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, समबडी कैन से दैट्स अ सिंपल, जो फूड वेस्ट है उसको उठा के उसमें डाल दो, सॉइल के अंदर कंपोस्ट बन जाएगी विद टाइम. नो, इट विल लीड टू सम एनारोबिक ट्रांसफॉर्मेशंस दैट विल प्रोड्यूस gases like ammonia, hydrogen sulfide, methane, which is very foul and it's very toxic to plant growth. That's why you need to convert this all the waste, municipal solid waste which I'm talking about, into a simpler fine substances which can be easily taken up by the plants. वो क्या होता है आपकी, मैंने आपको बताया था, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट्स बने होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, शुगर है, कुछ और चीज है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, है ना, प्रोटीन है, विटामिन हैं, फैट्स हैं. तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, पहले इनको ब्रेकअप करके छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं. Okay, so these particular things can be easily taken up by the plants when they are mixed with soil, can be easily taken by the plants, and they can really grow like anything. Okay, so that's why you are basically going to have compost which is actually being added to soil. So composting is what? Composting is a biochemical process in which aerobic and anaerobic both, I want to show you no doubt with time, decomposes organic matter. Which organic matter? Organic matter I'm talking about, the waste which you are taking, that is wet waste you are going to take, okay, into valuable manure. Manure means it is easily assimilable particular nutrients like nitrogen, phosphorus, carbon, potassium, everything, and which can be easily taken by the plants, is called the compost. Okay. So this is organic what we're talking about. So I'm going to discuss these things in detail with time, no doubt. So organic matter, okay, so temperature is being maintained, mesophil bacteria will be active,
and sometimes the thermophilic bacteria will be active. I'm going to tell these things in detail no doubt in coming slides, and they will slowly act on this kind of organic matter which is present in compost to convert it to final form, that is compost. See the final product and see the raw product, and see this is easily taken up by the soil and plants, and it can be easily mixed with soil. So composting is defined by the human intervention to make the process of decomposition. Okay, so with a combination of proper environmental conditions, you need to provide the adequate time. Also, microorganisms, they really turn raw organic matter into a stabilized product, which we call compost. And I told you, through composting, readily available nutrient and energy resources are transferred to carbon dioxide, water, and simple forms of organic matter. That's called finally compost. Okay. So you need to have a process management for that. You go through this, and no doubt, once you want to have a good quality compost, you need to concentrate upon the key parameters, like what is the microbial load. What is the microbial load means आपकी organic load कितना है, सॉरी माइक्रोबियल लोड कितना है, आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म कितने ज्यादा हैं. तो मैंने जो एएसपी में पढ़ाया था आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, अगर माइक्रो भी नहीं बचेंगे तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होगा ही नहीं, ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम नहीं करेंगे. सेम यहीं पे भी है बेटा, अगर माइक्रो लोड कम है तो ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम नहीं होगा तो वो डिकम्पोज नहीं होगा तो आपका कंपोस्ट नहीं रेडी होगी. एंड नो डाउट इफ दे आर इन अबंडेंस, बट अवेलेबल कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो अप्रोप्रिएट नहीं है. कार्बन नाइट्रोजन मींस ये सबसे मेन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, नॉट बिल्डिंग मटेरियल्स, मेंटेनेंस के लिए, बॉडी एक्टिविटी के लिए उसकी माइक्रोब की. तो लोड प्रॉपर है, अगर रेशियो प्रॉपर नहीं है तो दे विल नॉट ग्रो. देन मॉइस्चर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, ऑल दिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल, जो मैं आपको बताने वाला हूं. ओके, so what is the role of microbes in no doubt composting? We'll go through this beta. So it's all the work of microorganisms beta. सीधी सी बात बताऊं, it's all work of microorganisms. Serious. So most active players in composting are bacteria, actinomycetes, fungi, and protozoa, and they all are present in the organic waste material. By default, they are present. But you need to reorient them, these particular microbes according to their activity. कैसे मैं बताने वाला हूं आपको. Okay. So composting is basically dependent upon the succession of microbial activities. Okay, कैसे मैं बताने वाला हूँ. Environmental activities or environment created by one group promotes the activity of a second group. कैसे? Mesophilium, thermophilic, जो बता के चुका हूँ, अभी दिखाने वाला हूँ आपको. ठीक है. So different kind of bacteria, they're active at different phases. Okay. So bacteria and fungi have more important role to play in the decomposition process. So you, first of all, this is something very important. You need to define the optimum temperature region where all the particular bacteria are active. If I'm talking about a mesophilic bacteria, they are active between 25 to 45 degrees centigrade. And if I'm talking about thermophilic bacteria, they are active in a temperature range of 45 to 70 degrees centigrade. Okay. So how they are going to becoming active and how they are playing role, I'm going to discuss, no doubt. So this is what I want to show. If you really go to this graph, see, you have a red line, you have a magenta line. So see this. So this is days of days. This is the temperature or percentage of decomposition. See this. At the initial phase, the mesophilic bacteria is active. The mesophilic bacteria, they are active between 25 to 45 degrees centigrade, basically. So when they are active at this particular range, in this particular range, and your decomposition rate is at a peak. Decomposition means bacteria are very active in degrading the organic content present in the waste. So they are very active in degrading the
waste which is being available to them. So maximum degradation, maximum composting will be done in this particular region. Okay. So see this. Slowly and slowly and slowly and slowly, if you see the temperature range is very stable at the 45 degrees centigrade. But soon at this particular level, at after 2 or 3 weeks maximum, depending upon how you want to manage that, immediately it shoots up to 70 degrees centigrade. If it shoots 70 degrees centigrade, thermophilic bacteria will be active. Now, what the thermophilic bacteria will do? What the thermophilic bacteria do? Thermophilic bacteria will do the work of sanitization. Means now they kill all the bad pathogens in the compost. Okay? So see this. Decomposition rate drops sharply as sanitation kills all the good and bad microbes. So that you want, that you really want. Okay. So once all the good or bad bacteria are getting killed, now your compost is ready. You can really handle. Otherwise, अगर उसमें आपके ऐसे होंगे pathogens होंगे, तो it's not easy to handle. Can contaminate. And see how the temperature rises. अब मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ आपको. So first of all, mesophilic organisms experience most rapid growth. As I told you, temperature 25 to 45 degrees. This particular, okay. So these are basically dominant with the early phases of composting. The temperature is near ambient. क्योंकि अभी माइक्रोब ग्रो करना शुरू करेंगे, जितने ग्रो करेंगे उतनी और रेस्पिरेशन करेंगे, जितनी रेस्पिरेशन करेंगे उतनी हीट रिलीज करेंगे. ओके. और तब आपके थर्मोफिलिक एक्टिव होंगे जाके. But early phase में you have mesophilic active, which are working at very good 25 to 45 degrees centigrade. So they need oxygen because in the starting you have oxygen available. So aerobic bacteria are active. I told you in the beginning aerobic and anaerobic. So how aerobic? In the initial phases, oxygen is present in the void space. कहाँ void space? ये waste है ना, waste dump हो रखा है, ये रहा waste. अलग अलग वेस्ट पड़ा है, उस वेस्ट के वॉट स्पेस के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो वो ऑक्सीजन अवेलेबल करेंगे माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू हैव ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू एनर्जी. ओके. So at the part of process, over time heat is generated as chemical. Why heat is generated? Because the chemical bonds of all the substrate which is present in the waste are broken during this particular process. ठीक है. Now, अब ये जो कंपोस्टिंग का पाइल होता है ये इंसुलेटेड होता है, ऊपर कवर होता है, पूरा ऊपर एक लेयर होती है पूरी कवर करके रखती है उसको, तो हीट अंदर ही रहेगी, तो हिंदरी रहेगी तो आप अंदर ट्रैप होगी तो टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा बच्चे. ओके. सो इन द इंसुलेटेड सेंटर व्हेन द टेम्परेचर बिल्ड्स बियॉन्ड 45 द मेसोफिल्स डाई और इनएक्टिवेट. तो मेसोफिल्स मूवमेंट टेम्परेचर क्रॉसेस 45 45 48 50 55 60 द ऑल द मेसोफिलिक बैक्टीरिया विल डाई. ठीक है जी. Now once the temperature shoots that range, that going to activate thermophiles. Now once they are active, they are slowly going to replace all the mesophiles in that section, and this generates a lot of heat, and this heat is going to kill all the pathogens में बताया था अभी, है ना, and weed seeds are killed, which we really require. Okay. So as the substrate depletes, the thermal bacteria die and pile maintain the temperature. So जैसे substrate खत्म होना शुरू हो गया, इसके बीच में खाना नहीं मिलना उनको, जब खाना नहीं मिलना तो मरने शुरू हो जाएंगे, then will die. The temperature of pile decreases. Okay. So with the fall in temperature, mesophil फिर activate हो जाएंगे बेटा and decompose the substrate जो भी पड़ा उसके बीच में. Okay. So this is the overall process I'm talking about, how the composting is being done. जो आपकी compost बन जाती है, जो आप घर में भी कह रहे हो ना, वेट वेस्ट है उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करना रख दिया, कुछ टाइम पे कंपोस्ट कन्वर्ट हो गया. So this is the work of microorganisms only. Work of microorganisms only. That is mesophils and thermophiles. Mesophiles, they are active in 25 to 45 degrees centigrade. Thermophiles, they are active above 45 degrees centigrade till 70 degrees centigrade. Okay. And how the 45 and 70 degrees temperature is attained? I told you it is basically heat trapped within the system. When the heat trapped within the system, slowly is going to kill the mesophiles and it's going to activate thermophiles. So the thermophiles they are at active stage, the peak stage, they are going to kill all the good and bad. This present in the compost, and finally we'll get
like settled compost, stabilized compost, which really want, free from any kind of pathogens and full of all the nutrients. Okay. Now, sometimes you need to have biological process control in systems, like you need forced aeration systems. Why? Because I told you, microorganisms that really consume the void space present in the waste. Once all this is consumed, your mesophilic starts to die. For avoiding that, for prolonging that kind of activity, we can use a forced aeration system. Forced aeration system is, मैं बता दूं, फिर आगे दिखाऊंगा आपको. यहाँ पे मैं एक ब्लोअर लगा के पाइप डाल के यहाँ पे पाइप डाल दूंगा. जैसे मैंने पाइप डाली बच्चे, क्या हुआ? आपके अंदर एरेशन पहुंची तो आपको फिर ऑक्सीजन पहुंच गई उसके बीच में. ओके. एंड नो डाउट यू गेट मोर कंपोस्टिंग. सो ये एक मेथड है, इसको पढ़ लेना बेटा. नाउ एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म जो मैं आपको बता चुका हूं डिटेल में. नाउ दीस आर द फ्यू मेथड्स व्हिच आर बीइंग अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड for composting. This is a method: windrow, static pile, investor composting, vermicomposting. Okay, so how they look like? The windrows are like this. You can go through beta very fast. Go through this beta. So windrow is basically talking about a technology which is used for composting. Okay. So there are a variety of technologies available for using this for formation of compost through municipal solid waste. So basically they are, see this, windrow, static piles, and vertical vectors. I want to show all these things with time, no doubt. Windrows are defined as a regularly turned elongated piles shaped like a haystack, like this. I want to show you. Windrow क्यों बताते हैं, मैं बताता हूँ आपको. So they can have 100 meters or more in length, like in length. Okay. So this cross section, the pile which this windrow through this pile, ये एक छोटा सा पाइल है बेटा. ठीक है, ढेर इसको बोलते हैं. ठीक है, their dimensions vary, but mostly when you talk about windrows, it is 1.5 to 3 meter high and 6 or 6 meter in width. Okay, so individual windrows may be constructed over a period of several days or weeks, but they are usually each managed as a single batch. How? See, it's like this. These are windrows, like how wind flows now. So similar to that. See that piles, then this way. See this way. See this. This way, like this. This is windrow. See this pile height is what I have discussed with you, and width what I discussed with you in the previous slide. Okay. So instead of a big pile for composting, we have windrow or static pile. Beta. Static pile is like some kind of what I've discussed. Static pile can be shaped like a much like a windrows or an elaborate pile or bed. This is a huge pile. Okay. So once constructed by a conveyor or loader or truck, the pile remains in place until decomposition slows. Decomposition slow कहाँ पे होगी? वही जो मैंने बताया है. कुछ दिनों के बाद, एक महीने के बाद जो प्रोसेस पूरा है, 15-20 जो भी है, 3 week, 4 week, 5 week, depending on how going to maintain the conditions. जब मेसोफिल थर्मोफिल में कन्वर्ट होंगे, थर्मोफिल मेसोफिल में होंगे, तो वो स्टेबलाइज हो गया बेटा, वहां पे स्टॉप कर देंगे. ओके, ठीक है. So this is static pile. See this, एक बहुत बड़ा पाइल बना दिया हमने. ओरिजिनल ओवरटर्न्ड, रिकंस्टिट्यूटेड और टर्न. क्यों? देखो ये बी है और ये है. हम 15-20 दिन के बाद
इसको ऊपर कर देंगे और उसको नीचे कर देंगे। क्यों? जो हीट ट्रैप्ड है तो होल ट्रैप हीट ट्रैप्ड विल बी लीस्ट, एंड जो बाहर वाला अनएक्सपोज्ड है वो एक्सपोज होएगा अंदर। दिस यहाँ भाई अभी अभी यहाँ पे देखो जो बाहर है ना, यहाँ पे अभी तक मटेरियल जो है अभी भी डिग्रेड नहीं हुआ, अंदर वाला डिग्रेड होगा, तो उसको बाहर निकाल देंगे। हीट ट्रैप निकल गई, हीट ट्रैप निकल गई तो नो डाउट आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर डाउन हो गया तो आपके मेसोफिल एक्टिव रहेंगे, मेसोफिल एक्टिव रहेंगे तो बी वाला जो अंदर आया है, जो ए वाला अंदर आया, सपोज इस ए वाला जो बिल्कुल अंदर गया है, बी तो अंदर वाला ही है, ए बाहर वाला था, तो अब उसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी बेटा। ठीक है, सो दिस इज समथिंग लाइक स्टैटिक फायर। ओके, नाउ यू कैन, अब जो मैं अभी बता के चुका था अभी लास्ट स्लाइड में, अगर आपको अभी याद हो कि दिस प्रोसेस कंट्रोल कैन आल्सो बी थ्रू द प्रेशर और वैक्यूम इंड्यूस्ड एरिएशन which can contain temperature, oxygen level in the system. So you're going to use the blower piping. See this blower pipings for aeration. See this actual field connection. So this is blower beta. It's being connected to a pipe, and these pipes are being given to the static pipes. See this. ठीक है, बाकी जो थोड़ी थोड़ी कंडीशन इसको पढ़ना बेटा। तो spines are often covered with a layer of wood chips. इसको wood chips से कवर करते हैं बाहर, और mature compost. Why बेटा? Just to insulate the active compost. कौन सी active compost? उसके बीच में है, जो बिल्कुल बीच में हो रही है बेटा, from the ambient temperature and provide some odor treatment. ठीक है जी, is that okay बच्चे? You can just go through these kind of things, very simple बच्चे, and this is like, this is not a rocket science technology which you can do. It's a very simple thing which we can do, but we are not doing anything, and that's why we have a huge problems in our hand when you're talking about the waste management. So India is reeling under great pressure for managing its waste. I mean, like they are totally dumped. Okay. So you have some kind of reactors also sometimes. So these reactors are vertical composting reactors. Generally, basically, you want to make 3 meter, 3.5 meter, 4 meter high, and can be housed in a silos. You know, silos storage place होती है बेटा एक, जिसमें हम जैसे घर में हम सिलोज रखते हैं। सिलोज को मैं बोलूँ, दिखाऊंगा बेटा क्या होता है बेटा, लेकिन सिलोज होते हैं जिसमें हम एक बेसिकली एक स्टोर कवरिंग होती है बेटा। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल टॉप से फिट किया जाता है, ये देखो ये सारा कुछ। So green is organic bete. Green is line for organic. The organic waste is being mixed into the pit or the composting chamber. Okay. Then you have airflow from the bottom. Then you have lower pile, middle piles, upper pile. Accordingly, you want to manage all these kind of things. Just like compost के हम उसमें maintain कर रहे हैं, हमने इसको divide कर दिया इसके बीच में, और क्या है। कंपोस्ट में भी हम क्या करते हैं, 3 स्टेज होते हैं, लोअर पाइल, मिडिल पाइल एंड अपर पाइल। फिर इसको ओवरटर्न करते हैं, तो हम इसको वर्टिकल चैम्बर में ले आए बच्चे। ठीक है, so these are the some particular key points where you check whether you have a good quality compost or not. Okay, so there are many criteria available for evaluating the performance. So basically all the criteria, they actually converge to 3 particular points when you're talking about composting of municipal solid waste. Number 1 is the product quality. Number 2, the percent rejects, means how much reject is there, and recycling rate. Okay, so reject product quality means once you have done with your compost, normally what is being done, the compost is being tested for different kind of elements. कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये है, अगर उस रेशियो में प्रॉपर आ गया, दिस मींस उसके जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ब्रेकअप हो चुका है। कंपोस्ट देख के नहीं बोल सकती बच्चे कभी भी, तो हम जनरली क्या करते हैं, उस कंपोस्ट का एनालिसिस करवाते हैं। तो एनालिसिस पता चल जाता है कि भाई कितना कार्बन कंटेंट आ गया, कितना नाइट्रोजन आ गया, कितना फास्फोरस आ गया, कितना ये कंटेंट आ गया, कितना ये आ गया। ओके, सो कंपोस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी कैन इंक्लूड एस्थेटिक, फंक्शनल। एस्थेटिक मींस स्मेल लेके पता चल जाता है। अब फूड को रख लो 1-2 दिन, क्या स्मेल आएगी, गंदी भयंकर स्मेल आएगी। कंपोस्ट की स्मेल नहीं होती। ओके,
सो ये बाकी पढ़ लेना बेटा, सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं है। आप एक बार देख लेना इसको एक बार, ऑल ऑफ यू। एंड वर्मी कंपोस्टिंग, मेरे ख्याल से सबको पता होगा बेटा, अगर नहीं पता तो पढ़ लेना, कुछ डिफरेंस नहीं है बेटा। मतलब वर्मी कंपोस्टिंग यू आर गोइंग टू यूज अर्थ फॉर्म्स, ठीक है। और जो कंपोस्टिंग करते हैं दैट सिंपल माइक्रोब्स यू आर टॉकिंग अबाउट, डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब्स यू आर टॉकिंग अबाउट। व्हेन द वर्मी कंपोस्टिंग इट इज बेसिकली अर्थवॉर्म्स। थोड़ी अनहाइजेनिक होता है बेटा, हमने देखा होगा अनहाइजेनिक है, लेकिन पर बहुत सी कंपोस्ट बनती है ऐसे, ठीक है। तो उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत बढ़िया रहती है, ठीक है। एंड सॉइल मॉइस्चर बहुत सर्टेन रहता है जिसके लिए, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। बट अर्थ वॉर्म्स को हैंडल करना थोड़ा एस्थेटिकली क्लियर नहीं है चीज, अदरवाइज वेरी गोइंग टू प्रोड्यूस वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट। Okay. Now this is all about composting. Now I'm going to discuss some last part discussion, which is the ultimate part of the solid waste management. Okay, what is that actually? I want to tell you what is that actually. I'm going to tell you. अब देखो जी, हमने सारे सब प्रोसेस कर लिए बेटा, हमने वेस्ट टू एनर्जी कर लिए, इंसिनरेटर कर लिया, पायरोसिस कर लिया, गैसिफिकेशन कर लिया, कंपोस्टिंग कर ली, वी हैव डन एवरीथिंग। लेकिन अब आप में से पूछे कि सर अल्टीमेटली जो वेस्ट बचता है उसका होता क्या है? इंसिनरेशन में आपने देखा होगा कि इंसिनरेशन में क्या होता है, आपका वेस्ट बंद करते हैं और कुछ नीचे बच जाता है, जो बताया था 30 to 40% बच जाता ना, वो उसको हम लैंडफिल में डालते हैं। अब लैंडफिल पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। वैसे भी जहां मर्जी आप यूज कर लो, ऐसा नहीं है कि वेस्ट पूरा कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कंपोस्ट में भी, ठीक है, बाकी चीजों में भी वेस्टेज है। हाँ, जितनी वेस्टेज कम होगी उतना हमारा आगे प्रोसेस थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। वो क्या प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसको बोला गया है इंजीनियरिंग लैंडफिल्स। क्यों इंजीनियरिंग लैंडफिल? मैं विद टाइम नेक्स्ट क्लास में इसका डिजाइन डिस्कस करूंगा आपके साथ। इसका फाइनल ऑप्शन बच्चे, ये फाइनल ऑप्शन है लैंडफिल। लैंडफिल मींस कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एक एरिया लेके, एक लैंड लेके उसके अंदर डंप करना है। जैसे लव कैनाल मैंने आपको बताया ना, वो तो कुछ और था। तो भाई हर सिटी, हर एक कंट्री में हर एक सिटी के पास लैंडफिल साइट होती है बच्चे। लैंडफिल साइट क्या होती है बेटा? जितना वेस्ट है जिसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता बेटा, ठीक है जी, उसको लैंडफिल में डालना पड़ेगा। तो कभी आपने सोचा होगा, ठीक है, would have wondered yourself by this thinking कि भाई इतना वेस्ट जनरेट होता है, हमारे कपड़े बनते हैं, हमारी नोटबुक्स बनती हैं, हमारी मशीनरी बनती है, हमारा सब कुछ बनता है, तो उसके बिहार पे जो रोज की रोज टनों के हिसाब से वेस्ट जनरेट होता है, वो जाता कहाँ है? प्रॉब्लम इज वी आर लीस्ट बॉदर्ड, प्रॉब्लम इज वी आर लीस्ट बॉदर्ड। लेकिन इतना वेस्ट जनरेट होता है, हजार्डस वेस्ट, और जो ट्रीट हो गया, रिसाइकल हो गया, वो अलग चीजें हैं, जो बच गया वो सीधा जाता है डंपिंग साइट पे। ओके, डंपिंग साइट एक बहुत बड़ी साइट होती है बेटा। जैसे पंजाब की, मैंने कभी आपको बताया होगा डंपिंग साइट कहाँ पे है बेटा? चंडीगढ़ के पास डेरा बस्सी है ना। सो डेरा बस्सी चंडीगढ़ साइड जो है, वहां पे नींबुआ ग्रीन फील्ड्स करके एक कंपनी है, नींबुआ ग्रीन फील्ड्स करके, जो हजार्डस वेस्ट डंपिंग साइट चलाती है बेटे। क्या किया उन्होंने? दे हैव टेकन अ ह्यूज लैंड, वो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड होती है बेटा, चलानी उनको होती है, पर है ना, ह्यूज लैंड, ह्यूज ह्यूज। आप लगा लो कि इतनी भी लैंड भी हो सकती है थापर जितनी भी, और थापर से हाफ भी हो सकती है। एंड दिस लैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर नथिंग, फॉर डंपिंग द वेस्ट। और वेस्ट डंप किसका करना है बच्चे? आप हो, आपकी इंडस्ट्री चल रही है भाई साहब, आपकी इंडस्ट्री चल रही है, तो आप एक दिन का बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हो, जो अल्टीमेटली डंप होना है लैंडफिल में, और आपको वो लैंडफिल में डंप करना पड़ेगा, बिकॉज लॉ सेज दैट। और नो डाउट डंपिंग करने तक का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन लेके डंपिंग तक का खर्चा सारा कंपनी देती है। किसको? जिसकी डंपिंग साइट है, लाइक निम्बुआ ग्रीन फील्ड्स, डेरा बसी, they are going to deal with all the industries nearby, all the industries nearby, those who are generating a hazardous waste, and that waste cannot be recycled, reused। हो सकता है, चलो फिर भी नहीं हो रहा, ultimately find space to the dumping site। अब सोचो कि ये डंपिंग साइट ऐसी होगी, इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट है, इसमें सारा वेस्ट रोज की रोज डंप हो रहा है, तो आज भर जाए कल भर जाए, तभी इसको इंजीनियरिंग बोला है। इंजीनियरिंग लैंडफिल मींस इसको
इस लेवल तक लेके जाना है कि 20-25 साल तक ये भरे ना। क्यों? मैं आगे विद टाइम बताऊंगा, विद टाइम कि लैंडफिल साइट है, वंस इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एंड इट्स फिल्ड विद वेस्ट, कवर कर दिया, तो इस लैंडफिल पे लाइफ लॉन्ग में कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग अलाउड नहीं है। लव के नाम आपको याद होगी मेरे ख्याल सबको। तो दैट्स अ डंप साइट। तो सोचो हम इतना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो जितनी डंपिंग साइट कम हो उतनी वेस्ट लैंड कम वेस्ट होगी बेटा, ठीक है। सो इट्स द लास्ट स्टेप टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, बिकॉज डिस्पोजेबल, अल्टीमेट इज डिस्पोजेबल। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? पॉपुलेशन ज्यादा है, वेस्ट जनरेट हो रहा है बेटा बहुत ज्यादा, है ना जी, और उसके अकॉर्डिंगली एरिया कम अवेलेबल है हमारे पास। नंबर 3, हमारे पास सोर्स एग्रीगेशन नहीं है, हम वेस्ट जनरेट कर ही जा रहे हैं, टनों के हिसाब से जनरेट कर ही जा रहे हैं बेटा वेस्ट। और बाहरली कंट्री पॉपुलेशन कम है, एरिया बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, एरिया बहुत ज्यादा है, फिर भी वो अपने वेस्ट को इतना मिनिमाइज कर रहे हैं, इतना मिनिमाइज कर रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग वेरी strange when it comes to like this kind of thing. Okay. See this. So this is conventional dumping beta. Conventional dumping means what we are usually seeing in and around you. देख लो दिल्ली वाला कन्वेंशनल डंपिंग है जो ओपनली हो रही है बच्चे, और उसके बाद आप अपने घरों में देखते हो, सॉरी घरों के बाहर देखते हो, मोहल्ला में देखते हो, रोड साइड पे देखते हो, ओपन डंपिंग है। सो दिस ओपन डंपिंग इज गोइंग टू हैव a very bad production of methane, a very strong greenhouse gas। कैसे मीथेन बनती है मैंने आपको बताया था अभी पीछे, अंदर बैक्टीरिया इस पर डिग्रेड करते हैं, मीथेन जनरेट करते हैं। ओके, सो यू हैव कंपैक्टर्स, कंपैक्टर जब चलता है इसके ऊपर लीचेट जनरेट होता है, और लीचेट अगर जनरेट हो गया तो ये क्या है बेटा, मैं आपको बताने वाला हूँ, भले यहाँ से सोच लो। लीचेट क्या है बेटा? इसके बीच में पूरा मॉइस्चर भरा हुआ है, लैंड जो लैंड फिल वेस्ट डंप है पूरा मॉइस्चर भरा हुआ है, एंड इट्स फिल्ड फुल मॉइस्चर। तो ऊपर रेन भी आ रही है, प्रेसिपिटेशन भी हो रही है, तो विद टाइम दिस ऑल मॉइस्चर जब रिटेन जो उसके बीच में है जो लीच आउट हो जाए लीच आउट होके अल्टीमेटली ये लीचेट बन जाता है। और लीचेट ये पूरा हैजार्डस है बिकॉज उसमें सारे केमिकल हैजार्डस केमिकल्स इसके बीच में है, एंड इफ नॉट कंट्रोल्ड इट कैन गो टू द ग्राउंड वाटर। ओके, इट कैन गो टू ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर पहुंच गया, अब वो पता क्या सिस्टम। ओके, तो इसकी डिटेल डिजाइनिंग मैं कल करवाने वाला हूँ आपको बेटे, ठीक है जी। तो 9:35 is here, so I can stop here, and the detailed designing we'll go to execute in next class.